symbols is called a pictograph. Pictographs are easy to read, express large number of data, but cannot express exact values. This is the pictorial representation of games selected by people in a colony. Bar graph. A bar graph is another form of graphical representation of data showing quantity of data according to the length of the bars. These bars can be either horizontal or vertical. This bar graph represents ages of different animals. From this bar graph, we can get the age of animals. Comparison of data. We can represent two sets of data in a bar graph. This bar graph shows average monthly expenditure in 2006 and also in 2007. This type of graph is called double bar graph. We can compare two sets of data using this double bar graph. Frequency distribution. Types of data. Raw data. Raw data is a collection of initial observations not yet organized. It is the information we get when we do survey. It can be classified into two types: discrete data, continuous data. Discrete data. Such data can be very precisely measured in whole numbers. The number of children in a family and size of shoes are some examples of discrete data. Continuous data. Such data can have any value between two whole numbers, that is, it can be measured with absolute accuracy. There will always be some error. Weight of students in a class and temperature in a city are some examples of continuous data. Frequency distribution table. Look at the following data. It tells you the performance grade of the students in a month: 6, 5, 6, 9, 7, 4, 2, 4, 7, 8, 3, 4, 9, 8, 2, 3, 5, 9, 7, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 7, 4, 4, 7, 8, 3, 4. From this data, we know only the performance grade of the students in a month. Let us form a table as follows. This table shows clear picture of the given data. From this table, we come to know the number of students in each grade. This table is known as frequency distribution table. The number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency. A frequency distribution shows how frequently a particular item occurs in a group. Frequency distribution table using class intervals. Data means when you talk about facts, which gives you some information. Now, information can be in the form of numbers. Information can be in the form of normal data, or it can be any form, which can be in the form of picture. So data can be in any form. Now let's come to two types of data which was told in the video. That one is called primary data and another is called secondary data. Okay, another one will be called as secondary data. Now what is primary data? Primary data means like जिसकी सोर्स जो होती है वो खुद पर्सन होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आई और मैंने आपसे सबसे पहले आते से सबसे पहले ये पूछना शुरू किया, टेल मी योर हाइट्स. ठीक है, टेल मी योर हाइट. सो नाउ एवरीबडी हैज स्टार्टेड like telling ki ma'am my height is 165, somebody has told 150 centimeter, somebody told 145 centimeter, somebody told 170 centimeter. ठीक है, ये डेटा मैंने आपसे कलेक्ट किया. ठीक है, नाउ कमिंग अनदर क्वेश्चन. सपोज मुझे आपका वेट पूछना है. ठीक है, मैं आई मैंने आपसे पूछा कि बेटा व्हाट इज योर वेट. मैंने एक एक कर से एक एक बच्चे से इंडिविजुअली पूछ लिया. उन्होंने मुझे तुरंत डेटा बता दिया कि मैम दिस इज माय वेट, this is my height, this is number of pets in my family, these are number of people in my family, these are number of senior citizen in my family. So these are the questions where the source is you only.
ठीक है, जो आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, जिसका सोर्स आप खुद होते हो, ठीक है। देन कम्स टू सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है बेटा, कि जब आपका सोर्स कुछ और होता है, फॉर एग्जाम्पल जिसके लिए आपको सर्वे करना होता है, जिसके लिए आपको किसी और सोर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आपकी कॉलोनी में कितने लोग हैं जो टू व्हीलर यूज करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी फैमिली के बारे में तो इंफॉर्मेशन जानते हैं, लेकिन आपको दूसरी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता। सो इन दैट केस आपको किसी और के मीडियम में जाना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, और फिर उस डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसे कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव आस्क्ड कि how many cricketers of Indian team have scored more than 50 runs in that inning। और सपोज अभी जब आईपीएल चल रहा था उसमें, तो उसके लिए देखो कुछ लोगों को तो इसका आंसर डायरेक्ट पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसकी सोर्स जो है वो इंटरनेट से खोजनी पड़ेगी, या मैच अपने घर में जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, जिसका सोर्स जो होता है वो किसी और तरह से आप लेकर के आते हो और वहां से पता लगा करके जो डेटा देते हो, that is called secondary data। So data are of two types, primary and secondary। Yes, so then coming to what is representation of data। representation of data या collecting data का मतलब बेटा ये होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि अगर हम डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं तो वो हमारी फर्दर और फ्यूचर यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, ये भी डेटा है, बिकॉज उसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो लिखे हुए हैं एक साथ, राइट फ्रॉम केजी पीजी से लेकर के जब तक आप अभी तक पढ़ रहे हैं 8 तक, वैसे करके आप जब जैसे मैं हूं, मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट। Okay, so when you talk about data, so these are the data which are pre-recorded, जिनको रखा जाता है ताकि फर्दर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको उसके बारे में उस पता चल सके। लाइक सचिन जो था वो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले कितने रन किस मैच में बनाता था, ये सारा रिकॉर्डेड डेटा है, और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को पढ़ने में भी काम आता है और उनकी फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। सो डेटाज आर ऑलवेज कलेक्टेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में, ठीक है, 10 साल पहले कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, 11वें साल में कितना एडमिशन हुआ, 5 साल पहले कितने एडमिशन हुए, ये सारी डेटा जो रहती है वो कलेक्ट करके रखी जाती है फॉर फर्दर यूज एंड फॉर द लाइक फर्दर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू this I told you that why to collect data and why collecting data is important. Now remember how to collect the data. Data can be collected in many forms. It can be collected in the form of pictograph, it can be collected in the form of bar graph, it can be collected in the form of double bar graph, it can be collected in the form of histogram, it can be collected in the form of pie chart, it can be collected in the form of frequency distribution table, and it can be also collected in the form of line graph, which you have already studied in previous chapter only. Okay, so there are many reasons to collect the data, and in which form we can collect the data, there are many topics which just now I told you, ठीक है, जिसमें से एक टॉपिक लाइन ग्राफ हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। देन बार ग्राफ आपने क्लास 6 और 7th में बड़ी डीपली पढ़ा है। डबल बार ग्राफ आपने क्लास 7th में पढ़ चुका है। सो इस साल द मेन ईयर विच यू आर स्टडिंग, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन हिस्टोग्राम, ठीक है, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज हिस्टोग्राम।